So thank you everyone. آپ لوگوں نے join کیا weekend about a very serious topic, so we'll try not to be very serious about it. But we are very, very serious about HR, right? We were having some discussion about کہ ہم کیا discuss کرنے لگے and suddenly we realized کہ یار یہ تو بڑے مزے کا topic ہے نا؟ So let's start from here. We have very, very brilliant minds here. We have Mohsin Nishat, we have اسلام. میں سوچ رہی تھی آپ کو نور کہوں کہ میں اسلام کہوں, لیکن اسلام اور نور دونوں ساتھ ساتھ ہیں. کیا خیال ہے؟ نور نون. اوکے پھر ٹھیک ہے. فراز ہے ہمارے پاس جنید ہیں. What we are going to discuss here is that where we are right now and where this future of the whole career is going in terms of HR, but not only in terms of career, but where this HR processes and in terms of how the HR is going to guide the organizations. Because مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی آگے organizations کر لیں, جتنے بھی changes آ جائیں, HR is going to be the center of this entire fiasco that is going to be the future. Because yes, artificial intelligence is going to lead or is leading the future, but the people going to be the center, because at the end it's going to be the human-to-human interaction. And as the future of technology is going to lead and is leading the organization, the human interaction become very central to the organization. And that's where the future of the human resource lie. So if I ask all of you, the panelists, where is your organization evolving currently, جو کہ ابھی ہماری اے آئی کی, we are in the midst of the AI revolution right now. And you've been working in very traditional to modernistic organizations who have seen all kind of HR evolution. All of you belong to organizations جو کہ have actually weathered the storm of Y2K and industrial revolutions, اور ٹیک کی بھی جتنی گروتھ ہونی تھی ان کی یہاں ہوئی. انڈسٹریل 4.0 بھی انہوں نے دیکھا, انہوں نے میڈیا ریولوشن بھی دیکھی, انہوں نے ٹیک ریولوشن بھی دیکھی, اینڈ دیز آر آل ویری بگ نیمز آف دی انڈسٹری. اینڈ ناؤ دے آر ان دا midst آف دا AI revolution as well. So if I ask you your experience where they are right now and how they are dealing with this kind of changes in HR. So we can start with you, Mohsin, how you are seeing it right now in your organization, and the same question from all of you. Ji, thank you. Am I audible? Yes. Okay, great. Thank you, Ji. Thanks for the question. And thanks for everyone to come here. Jaise kaha Hassan bhai ne bhi, on a very good sunny morning, or rather afternoon. I think I would say two things. اگر آپ مجھ سے ذاتی طور میری آرگنائزیشن کا میں پہلے بتا دیتا ہوں, بیکاز وہ کچھ بھی نہیں کر رہی. فرینکلی اسپیکنگ ابھی تک وہ اے آئی کے اوپر میرے خیال میں میری آرگنائزیشن از اے مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن, تو وہ ابھی تک بہت ساری چیزوں کو کنسالیڈیٹ ضرور کر رہی ہے. بٹ اف آئی سے دیٹ what I read about AI for other organizations or the types of my organizations out of Pakistan like Zara and آپ کی اگر وہ H&M and اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے, لیکن ہماری کمپنی ابھی وہاں تک نہیں پہنچی. ٹٹ بٹس میں ہم نے ایک دو چیزیں ٹرائی ضرور کی ہیں. دے آر ویری انٹرسٹنگ. ٹو ریزنس فار دیٹ, جن کی وجہ سے میں ایگزامپل دے دیتا ہوں اس کا پھر آپ کو, تاکہ اب اس کے بعد ہم سارے اور ڈسکشنز کرتے رہیں گے. آئی تھنک اٹس اسپرنگ آؤٹ فرام ون واز کاسٹ اینڈ ون واز پروڈکٹیوٹی. تو ہمارے جو شوٹس ہوتے ہیں ان کے اندر وہ دے ور ون آف دا بگیسٹ problematic area we had in one of our group organization, جہاں پہ کیسریا وغیرہ کے شوٹس کرنے ہوتے ہیں, ملٹیپل پارٹیز انوالو ہوتی ہیں, اور اکثر ہوتا ہے کہ یا تو پروڈکٹ ریڈی نہیں ہے, جب وہ ریڈی ہوتا ہے تو وہ جو ہماری ماڈل ہے وہ کئی دفعہ بہت حاصل کر رہی ہوتی ہے. تو ہمارے مارکیٹنگ اور کئی دفعہ وہ ان کو جب آ جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ آؤٹ فٹ ہی بہت برا لگ رہا ہے ان کے اوپر, اب اس کو میں پہنوں گی نہیں جب تک اس کے اوپر یہ آپ ٹویکس نہ کر کے آئیں, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. So we created 2-3 models who are not real and shooted جو ہمارے ڈیجیٹل کانٹینٹ کے لیے پوری شوٹنگ ہے وہ اس سے کی تھی. اچھا. اینڈ انیشیلی اس کا بہت اچھا رسپانس آیا کیونکہ خرچہ زیرو ہے,
جو تھوڑی بہت اس سافٹ ویئر کی 1 سال کی کاسٹ ہے وہ لگی. اس کے علاوہ آپ نے اپنی مرضی کی پوری آپ نے بتا دی کہ جی میرے آؤٹ فٹ کا یہ سائز ہے, اس کے اندر مجھے ایشین ایٹسیکٹرا 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 اس ٹائپ کی پرسنالٹی کی کوئی خاتون, یا اگر وہ لیجر کلب کا کوئی ماڈل ہے یا بچہ ہے چھوٹا تو وہ فٹ کر کے دے دو. سو جناب جاب ریپلیس کی نہیں جائے گی, کر دی گئی. جی تقریباً. لیکن یہ کہ اس کا جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, شروع میں بہت اچھا سرچ آیا, لیکن آفٹر اے ایئر کیونکہ اس کے اوپر کچھ چیزوں کا جو بھی ان کی سائنس ہے, آئی ایم ناٹ اے گڈ مارکیٹر مجھے پتہ نہیں ہے, بٹ ان کی کوئی وہ پرابیبلٹی ہوتی ہے کہ نارمل وہ اسی ٹائپ کی ایڈ کو انہوں نے اتنے ٹینیور تک چلاتے رہنا ہے ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, جو ان کے او کے آرز اور کے پی آئیز ہیں. تو ان کے بعد سڈنلی اسٹارٹیڈ ڈراپنگ, بیکاز ہمارے جیسے ملکوں میں ٹرینڈ یہ پتہ چلا کہ لوگ اس کے بعد جا کے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہے کون, اور جب ان کو بھی پتہ چلا کہ اس نام کی پرسنالٹی کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, سو اس کی ریپیٹ واچ ڈکلائن ہونا شروع ہو گئی, بیکاز پیپل ایکچولی, اینڈ دیٹس دا پوائنٹ آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ, سارے باقی انکلوڈنگ یور سیلف, ماشاء اللہ ایوری ون آئی تھنک از اے ہیڈ ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی دین می, دے اسٹارٹیڈ لوکنگ فار, وہاں سے وہ ان کا آیا کہ جی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو وہ ہمارا مجھے لگتا ہے دیٹس ون تھنگ وچ ٹو می از we should be discussing a lot about, is that AI will only aid us to do our jobs better maybe, will never be able to replace Faraz, Junaid and all of us. I think they can't. So it's a human symbiosis, yes, not actually replacement. No. That's one example I can think of. Great example actually, yes. So it's not replacing unless it is going to replace only those who are not using AI. So the illiterate of the future world are those who are not AI literate. But those who are going to actually use the AI are the people who are going to survive in the future. So future belongs to those who are the AI users, not the people who are going to be afraid of کہ جی میری تو اے آئی نے جاب لے لی. اے آئی کسی کی جاب نہیں لے رہا ہے. اے آئی از گوئنگ ٹو ہیلپ پیپل in doing their job more efficiently and create more space for them to do the job, تاکہ ان کے پاس زیادہ ٹائم ہو to do their job more. True. ٹھیک. What about you? السلام علیکم. آواز آ رہی ہے اینڈ تک؟ چلیں, تھینک یو ایوری ون ٹو بی ہیئر. چھٹی والے دن آنا مشکل ہوتا ہے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے, اجازت لے کے آنا پڑتا ہے گھر والوں سے ٹائم نکال کے. تو چھٹی والے دن آنا, بھائی ان کی بیویاں نہیں ہیں, آپ کی بیوی نے اجازت نہیں دی تو ہم کیا کریں؟ زیادہ لوگوں کی ہو سکتی ہیں. ووٹ کرا خواتین آپ کی بیویوں نے اجازت دی تھی, ان کے ہسبینڈ ہوں گے, لیکن ووٹ کرا کے دیکھیں میں نے ڈی این آئی ووٹ کرا لی ہے. 3-4 میرے جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں چہرے ہیں نا وہ سیم. اچھا جی, تھینک یو ایوری ون اینڈ ہمبل ٹو بی ہیئر سٹنگ ود دا ایکسپیرئنس لیڈرز. اے آئی کی جہاں تک بات کریں تو میرا, کیونکہ میں بلانگ کر رہا ہوں گورنمنٹ گروپ سے, تو ہم پچھلے لاسٹ ایئر کا آپ کو انٹرسٹنگ سٹوریز بتا دیتا ہوں جو ہم نے بھی ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. اس میں ہم نے سب سے پہلے تو ایک ہمارا ایک ٹیک سائڈ ہے پوری, جیکو کے نام سے ایک کمپنی ہے جو کہ آلریڈی بزنس کر رہی ہے اور پروڈکٹ بنا رہی ہے. تو ہم نے ان کو انیبل کرنے کے لیے ایک اے آئی کا پورا ڈپارٹمنٹ نیا اسٹیبلش کیا. اس میں ایک پی ایچ ڈی کو ہم نے ہائر کیا جو کہ اے آئی میں پی ایچ ڈی تھے, ان کے لیڈرشپ میں ہم نے پوری ٹیم کھڑی کی, اور کافی ایکسپینسو قسم کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑا. اور نہ صرف امپورٹ کے مسائل تھے پاکستان میں, ابھی اس کے پیپلز والی ٹیم جانتی ہوگی کیونکہ انہوں نے بھی کام کیا, اس کے لائسنسنگ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, تو وہ لائسنسنگ لینا وہ کیا. لیکن مزے کا رہا جرنی. ہم نے اسٹارٹ کیا فرام جی این این, ہمارا ایک نیوز نیٹ ورک چینل ہے جی این این کے نام سے. تو وی ٹرائیڈ کہ جو نیوز کاسٹر کو آپ دیکھتے ہیں جو نیوز بلیٹن دیتے ہیں, ریپلیس ود دا اے آئی ایجنٹس نا. اوکے. تو وہ شروع میں تو بڑا انٹرسٹنگ رہا, وہ ابھی تک ایکسپیریمنٹ فیزز میں ہے. ابھی اے آئی بھی لرن کر رہا ہے اس کو, ایموشنس کو اور یہ. تو وہ جو پہلا والا ایپیسوڈ تھا اس میں ہماری ساری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ بہت ایکسائٹ, ظاہری بات ہے اگر کسی نے کوئی کام کیا اور ڈلیور کرنا ہے تو پورا بورڈ اور ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی ہے. تو اے آئی کی ٹیم نا اس کو جو ہے نا وہ ہمیں اپنا پہلے جو ان کا ایجنٹ ریڈی تھا وہ ہمیں ڈیمو کرانے کے لیے بیٹھ گئے.
अब वो अचानक से जब वो न्यूज़ कास्टर स्टार्ट हुई तो एक सैड न्यूज़ भी उसने इतनी हैपनिंग में उसने वैसे नहीं ना सुनाएगी उस हाँ, जैसे वो एक खास तरह की आवाज वो में जो वो सुनाती है। लेजा देखे ओह, तो वो ऐसे ही है जैसे अभी एक फायर इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान में कराची में, बहुत बड़ा एक जारी बात है डिज़ास्टर था, उसको इतनी हैप्पीनेस और इतनी स्माइल के साथ एक्सप्रेस कर दिया जाए तो वो फ़ौरन रुक गए कि नहीं नहीं ये डिज़ास्टर हो जाएगा। लेकिन इस पूरे 1 ईयर में जो अचीव हुआ उसमें एक हमने एचआर में अचीवमेंट की, हमने एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल जो है वो एआई बेस कर दिया। उसमें ऑब्वियसली उसमें भी शुरू में प्रॉब्लम आए, लेकिन क्योंकि वो डाटा से ही ले रहा है, वो पॉलिसी रीड की हुई है, तो वो बता देता है जी छुट्टियां इतनी क्यों रह गई थी, ये शॉर्ट लीव क्यों लगी थी Nice. आपकी, इस दफ़ा सैलरी क्यों इतनी आ गई आपकी। सो आपने तो एचआर वो- एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑफिसर्स को रिप्लेस कर दिया। हाँ, रिप्लेस तो नहीं है लेकिन उनका काम आसान हो गया, वो जो फ़ोन कॉल और वो वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म होगी, वो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। सो आप उनसे कह रहे हैं कि अब ये वाले जो काम जो आप मुझे बताते थे, मैं इतनी दफ़ा दरख्त पे चढ़ा, जी, इतनी जी, दफ़ा जी, उतरा, वो ख़त्म हो वो गया, ख़त्म कर वो दिया। अब ख़त्म आप हो उनके गया। केपीआईस जी, जी, बेहतर जी, कर रहे हैं। जी जी वो उस तरफ जा रहा है। एक Good. वो हमने किया। सेकंड जो हमने अचीवमेंट की वो थी हमारी जो मार्केटिंग सर्विसेज की टीम है, वो बैठ के राउट प्लान करती हैं। जो हमारा बेवरेज का डिवीजन है और उसका अगर हम बात करें तो तकरीबन कोई 350,000 के करीब आपका यूनिवर्स है पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने शॉप टू शॉप जाना होता है ऑर्डर बुक करने। तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो राउट ऑप्टिमाइज ही नहीं हो पा रहे थे पिछले 4 to 5 एंड एआई ईयर विल से। डू इट लाइक दिस। एआई ने ऐसे किया कि नहीं, Nice. अगर आप इस राउट पे नहीं है तो आपको ये वाला करेंगे तो आपका टोटल राउट ऑप्टिमाइज होकर इतने टाइम का हो जाएगा ग्रेट और एग्जांपल। हो जाएगा उसका। फिर हमने उसी में उसको नेक्स्ट ट्राई किया। जब राउट ऑप्टिमाइज हुए तो हमने कहा ओके, हमें जो टैलेंट है उसको भी ऑप्टिमाइज करना, राउट के साथ लिंक है। तो हमने उसे एक और चैलेंज दिया एआई को। हमने उसे कहा कि जो नॉन परफॉर्मर है वो ज़रा हाईलाइट कर दें, तो वो भी region हाईलाइट wise। हो गए। वो हाईलाइट हो गए। तो मैंने अपनी ही टीम से पूछा, मैंने कहा आर यू सेटिस्फाई कि हम ये जो उन्होंने नॉन परफॉर्मर निकाले हैं 10%, हम इनसे गुड बाय कर लें। तो उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल, सीईओ बहुत हैप्पी होंगे क्योंकि एआई ने कहा है कि ये बंदा ठीक काम नहीं करता। परसेप्शन बेस नहीं होगा तो डाटा बेस है। तो मैंने उन्हें कहा कि चले हम एज एग्जांपल एक स्ट्रगलिंग रीजन ले लेते हैं अपना। वो फैसलाबाद को हमने लिया जहाँ अभी गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है, उस तरह से ब्रांड बिल्डिंग पे काम नहीं हो रहा। तो वहाँ पे देखते हैं कि उसने जो लो परफॉर्मर निकाले उनको जाके खुद भी देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनके राउट्स को देखते हैं सारा। तो देन समझ आया कि हमने अभी उसको उतना लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं दिया कि उसको पता हो कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर टाइमली इनेबल नहीं था। ठीक है, एब्सोल्युटली। इस राउट के ऊपर फलां ब्रांड जो है उसने ब्रांडिंग ज़्यादा की है, उसने उसकी होल्डिंग पकड़ी हुई है, तो अब वो ऑर्डर बुकर का कसूर ही कोई नहीं है। तो वहाँ पे जहाँ पे मेरा ख्याल है कि अभी तक जो मेरी लर्निंग रही है कि जहाँ पे जजमेंट्स आएंगी वहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस ही होगी। हाँ, हमारा काम ज़रूर आसान होता है कि वो डाटा शायद हमें 6 हफ्तों में इकट्ठा करना पड़ता है, जो उसने 6 घंटों में हमारे सामने कर The दिया। more data you will give, such a great example and practical example of how organizations are using it. Such a great example. Thank you so very much for us. Okay, so we're experimenting with AI. It's like a phase of romance where you're Yeah. kind of saying, अच्छा ये क्या होता है, वो क्या तुम्हें क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है वाला Nice. relationship चल रहा है लोगों का. Use cases निकलना शुरू हो गए, right? So Great. we've done exactly what Mohsen has done. We're experimenting in creating our own bots to answer queries. So operational चीज़ें आप कर सकते हैं. And you are in dairy side of. So we have a large textile company. Right. We employ about 12,500 people. There are 4 business verticals. And then we have a dairy setup which is relatively small and there are 2 business verticals. So 6 Right. business verticals हैं. There's this diversity of work because मुख्तलिफ किस्म के काम हो रहे हैं. We're core manufacturing. Right. There is a little reluctance in the organization because उसकी adaptability लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमने इसको कैसे implement करना है. And there is a little bit of reluctance to experiment and then there's that fear कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई बम फट जाएगा, जो कि नहीं होना. I think what we really need to realize is कि इसको they will never be able to maybe take away that human element. और उसकी जो application है ना, and because this is an HR forum, I try to create a user उसका जो perspective है is that we've tried experimenting with a few automated AI recruitment bots. ठीक है? Now we think कि जी हम एक AI को देंगे और वो आके इंसानों के facial expression judge करेगा, वो पहली बात तो नहीं कर पाता.
दूसरा जो हम बहुत critical चीज़ miss कर जाते हैं is that when you're doing a recruitment, you're giving the candidate an opportunity to assess you as an organization, assess your culture. Why are we taking that away from the candidate? Absolutely. ठीक है? That is inhumane. It's unfair. ठीक है? It's like the example that we were having with Shahrukh earlier. You have an online interview and ask the candidate to turn on the camera, and the panel doesn't want to turn on the camera. Yes. It's unfair. So the rules of the games haven't been decided. कि हमने AI को इस्तेमाल कैसे करना है. बिल्कुल. And that is really important. So people in HR who are working on AI need to factor in the human side of automating processes. ठीक है? It's okay to find out कि यार मेरी गाड़ी में कितना fuel allowed है. Just like you go to a bot and get that. मुझे कितनी छुट्टी authorize है, मुझे paternity leave कितनी है. Fair enough. जहाँ value addition है, जहाँ पे human है, you can't, if I expect कि I'm not doing really well, I don't want to talk to an AI telling my employee कि यार you're not doing well. I want a human connection because if I want to defend myself, वो humanity is being taken out. वो नहीं करना चाहिए. I think we're going a little overboard there in our ambition to be the first. ठीक है? कुछ चीज़ें करनी चाहिए. And I'll quote, can I go slightly Sure, off topic, sure. is that Ibrahim showed us something that probably the industry doesn't practice in HR consultancy, that they lay out their pricing model. Yeah. But then हम अपने आप को confine करते हैं in looking at the industry norms. And I think organizations के लिए सबसे बड़ा restrictive factor है कि हम अपनी industry के norms को compete करते हैं. Maybe we need to become the worthy rival that doesn't exist. Yeah. ठीक है? So that's an experiment they're doing. I think it's a bold move. Maybe the industry will follow. And the first mover advantage होगा. AI के अंदर भी we need to find कि हमने उसको कहाँ responsibly इस्तेमाल करना है और उसके rules of the games को determine करना बहुत ज़रूरी है. That you don't take away अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए दूसरों की ज़िंदगी मुश्किल नहीं करना. I think that's what's probably missing. Great example. जी जनाब. Very nice. Okay, so let me build the context that why artificial intelligence is so important for our organization today. So Fatma is mainly in fertilizer business. For the last year, the revenue was around 232 billion. And fertilizer is the growth engine for all the business expansions. आप लोगों ने PIA की acquisition अभी सुनी होगी. Fatma is one of the consortium members. Then we have a project in Shagi, which the project is bigger than the Barrick Gold in Pakistan, then alluvial gold. But overall, the growth engine is fertilizer business. Yes. And we truly believe that our people are something जो कि इस सारे को enable करते हैं. And this is one of the reasons our EVP is with you, we do best. So our approach towards AI is based on long-term sustainability, not short-term wins. So what we did is we formed an AI council and selected functional champions and build a complete system on top of our digital ecosystem. We identified use cases and then we started implementing those use cases. And of course, हम लोगों ने prioritize किया, ROI देखा. I'll share few use cases that we implemented in HR. So usually HR is very reactive and has a reactive approach कि कोई अगर चला गया तो हम उसका exit interview form बाद में पढ़ रहे होते हैं, right? So what if we can actually predict कि कौन छोड़ के जाएगा और उसके reasons क्या हैं? So we started to build a model in 2024 कि we actually took around 15 years past data और फिर हमने उस पर मॉडल बिल्ड किया. अभी कोई बात कर रहा था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट along with artificial intelligence. So we failed for 60 times while we were building the model. Eventually हम लोगों ने मॉडल बिल्ड कर लिया and the worst thing about prediction is you have to wait to validate your model. Yes. So after 6 months we looked at कि हमारे पास कितने लोग छोड़ के गए और कितने इसने बाय नेम प्रेडिक्ट किए थे. तो 28 लोग छोड़ के गए, उसमें से 14 एग्जैक्टली बाय नेम वो थे जो इसने प्रेडिक्ट किए थे मॉडल ने. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव वी रीच्ड आउट टू based on the model and the data we reached out to the people और हमने उनकी issues को address करना शुरू किया. So instead of being reactive we were proactive. Right. And we increased our engagement level. Our employee engagement index was around 92%. Right. So which is a testament that the model worked. And on top of it, we deployed robotic process automation
for ensuring that people who are engaged in monotonous tasks, they shouldn't be engaged in operational activities. Strategic activities की तरफ आएँ, tactical की तरफ आएँ, ताकि ये जो business expansion हो रही है उसको support कर सकें. तो वहाँ से हमने अपने HR के resources को free up करना शुरू किया. So ये 2 example हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं. जिस तरह discussion continue करती है, Great. I'll share. I think that's a great example of using the HR capabilities to actually optimize with the help of AI. अब ये सारी examples सामने रखते हुए मुझे ये लगता है कि lot of things that are being developed on is based on what kind of skills, what are kind of talent is existing. So हमारे पास बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो ये question अपने जहन में कर रहे होंगे. These are great projects that are happening in the organization. And since I am going to be in the organization, or I am in the organization, what my future looks like, what kind of skills do I need to develop, what in order to stay longer in the future in the organization, what kind of reskilling I need to see from. So आपको क्या लगता है, and I think I should ask you क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी human और acquisition पर भी काम किया है, तो Faraz, what do you think that kind of reskilling do you think that the talent will need to have in the future organization? Okay. So I think सबसे पहले तो empathy है, because you're dealing with humans all the time, right? Irrespective of whatever role that you are in, you have to realize that that's fundamentally what's missing in our organizations. And उसके impact बहुत ज़्यादा हैं. लोगों के retention के ऊपर है, लोगों की motivation के ऊपर है, लोगों की engagement के ऊपर है, लोगों की productivity के ऊपर है. So that's something that we need to do. We also need to adapt to the changing world and realize that my organization has people who were born in the late 60s, and I'm from the 70s, and then there's 80s and 90s and even 2000 का आगे. So 5 decades के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, multiple generations, you can call them X, Z and millennials, and they have different needs. ठीक है? So you need to learn to coexist with people, or which I said empathy plays a real big role to be able to say कि यार हमारी needs कुछ और हैं, जो 2002 का बच्चा है उसकी needs कुछ और हैं, and we've got to come midway and understand that these people need to be treated differently. ठीक? Learning agility, I think that's really, really critical. The amount of information that is produced now used to be produced in decades. And then for us to be receptive to, one, seep that in, reflect, and then see what can we do about it. AI is one example. कि आप उसको कर लें. Technology की adoption is really important. People are reluctant to let go of things that they've historically done because they लगता है that's what got me my growth. ठीक है? Because I was really good marketeer, and ठीक है, so I will or a really good salesman. I will not let go of that skill. So when you're promoted in ranks and you're now managing people who are doing sales, you still don't let go of your sales because say this got me my growth. And that's what you have done for us. I've Yeah. seen your growth as well. You have done I've so done quite a many bit. things, and you have learned all the way. And you're mashallah in HR as well, and you've changed your career altogether in your lives as well. Gee, so I have a few, yes, I think so that's really important, your ability to learn new. I think as an individual, one advice before I hand over to somebody else is that the only person that you should be competing with is yourself. Yeah. Who were you yesterday? ठीक है? In So- every sphere. हम लोग करते हैं कि हम professionally अपने आप को बहुत ज़्यादा focus करते हैं. We don't look at are we good friends? Can we be better colleagues? Can we be better children to our parents? Can we be a better husband or wife? Can I be a better father every day? Start competing with yourself. I think there is no way that you can fail. So great, I think, answer ke adaptability, learning ability, having the learning agility, technology, Adaptation, adaptation, and competing with yourself. And competing yourself. 5 आप लोगों को skills मिल गई हैं जिसमें आप लोगों ने अपने आप को reskill करना है. I think you can't have the better solution than that. Please give him a big hand. इससे ज़्यादा आसान तरीन चीज़ आप लोगों को नहीं मिल सकती, बट ये बहुत मुश्किल है करना. ऐसा करने में आपके बाल सफ़ेद भी हो सकते हैं, जा भी सकते हैं, उम्र भी लग सकती है. लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा, आसान नहीं है इंसान होना. So I was saying that, Sabat and I were saying that if we start talking the way that we normally talk, we'll have to order dinner. So I had to rush through all of that. Yes. I'll come to you, Mohsin. हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हमारे पास इस वक्त बहुत सारी चैलेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशंस को. जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि जब हम लोग कर रहे थे, हम
اور ہم سب نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جاب بھی کر رہے تھے اور جاب کے بعد ہم لوگوں کا ایک پیشن تھا ہم سب کا کہ ہم پڑھاتے بھی تھے بعد میں. We have taught, you have taught in the universities as well. Our organization was pretty okay at that time. It was not called moonlighting at that time. It was appreciated in the organization. But a concept introduced ہوا moonlighting کا, and that came کووڈ کہوں یا نہ کہوں لیکن ٹیک کے ساتھ ضرور انٹروڈیوس ہوا کہ ایوری ون اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دا فری لانسنگ ایز ویل, اینڈ دا نیو ایتھیکل ڈیلیما اسٹارٹیڈ آف دیٹ کین آئی ڈو مور دین مائی جاب and can I offer my services somewhere else as well? And the question started coming, is it the conflict of interest? And our organizations started questioning the code of conduct, where your code of conduct is not allowing you to work somewhere else while you're working and is working online, an ethical dilemma. Future organizations will face more ethical dilemma because everyone can work everywhere. And everyone is looking to expand the economical channels for them. As the organizations are facing the economical dilemma, then individuals are facing the financial crisis as well. What is the future of the ethical dilemma in your point of view? So that again requires a whole debate. I think 6 ghante chahiye iske liye. But to curb it up, I think let's take a step back that why there are ethical dilemmas जिनके बारे में या तो हम हश करते हैं most of the time, face नहीं करना चाहते उन्हें, या we don't know how to handle. Very quickly, it's again मेरा favorite topic है, but I think we need to reflect. जैसे बड़ी अच्छी फराज ने बात की है कि आपका कंपटीशन आपका अपना है. बहुत पहले किसी बुजुर्ग ने कहा था that पढ़ इल्म ते फाजल होया कभी अपने आप ਨੂੰ पढ़िया ही नहीं. इसका आंसर actually it lies inside you. We need to first of all, जो ethics का जो main litmus test है ना, ये हो ही नहीं सकता कि आप वो act करें unless you are totally gone, जिसके लिए अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि उनके दिलों में मैं मोहर लगा देता हूँ. अगर आप वो नहीं है ना तो ये हो ही नहीं सकता, आपको पता ना चले that I am doing something which is as per the normal standard incorrect. It same goes with moonlighting. अगर मुझे पता है मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, let's take an example, otherwise it becomes a philosophical debate. मैं टेक कंपनी में काम करता हूँ, लेट्स से मेरा काम प्रोग्रामिंग है, मेरे पास 4 घंटे बचे हुए हैं. एक प्रोग्रामिंग करते करते मेरी प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी हो गई है. मुझे अगर पैसे कोई ज़्यादा देगा तो उस सेम टाइप की प्रोग्रामिंग के देगा. मैं उसमें 1-2 दफ़ा करूँ, मे बी दैट्स ओके. आई एम एक्सपेरिमेंटिंग कि मैं हेल्थ केयर के लिए कर रहा हूँ अपनी कंपनी में, तो मैं शायद मैन्युफैक्चरिंग के लिए ट्राई करके देखता हूँ क्या फ़र्क आता है. मेरी एम्प्लॉयबिलिटी फ्यूचर की है, उसके लिए मैं सिर्फ उस वो वाला कैप पहन के सोच रहा हूँ. बट द मोमेंट जहाँ पे ये चीज़ आ जाती है ना कि अच्छा कि आपसे $100 पर $100 1 घंटे का लेते हैं, मैं आपको 6 बजे के बाद ये काम $50 पर आवर में कर देता हूँ. ना दैट्स वेयर द एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है कि आप अब जो बिजनेस आपको पैसे दे रहा है काम करने के, उसी के शेयर में से ईट अप करना शुरू कर दें. और वो बहुत होता है, एंड दैट ये और वो डेडली चीज़ है. और उसका रीज़न यही है कि हम अपने आप को कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते. हम समझते हैं कि इन चारों को कॉन्फ्लिक्ट एथिक्स की ज़रूरत है. मैं तो फाइनेंशियल मजबूरियों की वजह से कर रहा हूं. अब मेरा सवाल फिर सबसे होगा इस बात पर कि देखिए हम तो ये आईटी के लिए तो आराम से कह देते हैं ना, लेकिन ये तो सब कर सकते हैं. अब सब फाइनेंस वाला ट्रेडिंग कर सकता है, एचआर वाला पॉलिसीज लिख सकता है बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, है ना. हम करते हैं ना, पॉलिसी लिखने का एक छोटा सा प्रोजेक्ट पर कर लेते हैं, नहीं करते. पक्की Don't look at anyone in the eye. Don't look at anyone in the eye. So अच्छा, लीगल वाले भी लॉ के ऊपर ओपिनियन देने के पैसे दे सकते हैं, राइट? अच्छा चलो छोड़े, क्रिप्टो तो सब कर सकते हैं. सॉरी, क्रिप्टो तो सब कर सकते हैं, है ना. तो ये तो कहीं जाके रेस रुकनी ही नहीं है. क्या हमारे COCs हमें फेल कर चुके हैं? अच्छा, इसमें जो COCs अपडेट होने हैं. हाँ, आप जो अपडेट वाली बात तो डेफिनेटली होनी है, क्योंकि COCs को पता नहीं हम क्या समझ के लिख लेते हैं कि ये दोबारा हमने कभी खोलना ही नहीं है. Yes. और ये इसलिए बना दिया है बिकॉज मे बी इफ आई एम एन एक्सपोर्ट कंपनी, माई कस्टमर वांटेड इट. इफ आई एम समथिंग विच इज हैव टू सप्लाई टू गवर्नमेंट, द बायर और द रेगुलेटेड वांटेड इट. वी नेवर लुक एट इट कि जी वहाँ पे अगर एक वर्ड कोई लिखा होता है, जैसे लेट्स टेक जो सबसे ज़्यादा COC में टॉप पे इंटेग्रिटी. व्हाट डज दैट मीन? Does it has to apply to 5,000 people who work for you and not to you? No, it apply to someone else as long as it is not applying to myself, then I am integrity. जी,
اور دوسری جو ہے نا؟ آپ کہہ رہی تھیں اس کو فیکٹ کو تھوڑا سا آپ مطلب وہ دیکھ لیجیے گا کہ میرے حساب سے شاید ہم نے اس ٹرم کو کوائن ابھی کیا ہے, بٹ اف یو گو 70 ایئرز بیک آئی تھنک سب سے پہلے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کام سٹارٹ ہوا تھا اسٹاک ایکسچینج کے بروکرز گلوبل اس کے اوپر اسکاؤنڈرلز اینڈ وہ پورے کے پورے بڑے بڑے اسکیمز ہائی لائٹ ہوئے تھے وہ کرتے تھے. ان کو انسائٹ ہوتی تھی کہ کمپنی کل آئی پی او کرنے جا رہی ہے یا بکنے جا رہی ہے, تو ہر ایریا کے اندر یہ اویلیبل ہے. آئی ٹی واز جسٹ این ایگزامپل, بٹ ایکچولی ویئر دیر آر ہیومنز دیر ول بی انیتھیکل ایپس. میرے خیال میں ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, رول آف دا گیمس چینج ہو گئے ہیں. ہاں, سارا جو کینوس تھا نا, اٹ ہیز چینجڈ, اٹ ہیز ایوالوڈ ناؤ. بڑا آپ نے اچھا کہا کہ سی او سی بالکل دیکھنا چاہیے, بٹ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ چینج ہوا کیا ہے. آلرائٹ. رائٹ. سو ابھی آپ نے بات کی کرپٹو کی, اسٹاک ٹریڈنگ کی. اگر آپ اپنی جاب پہ بیٹھے ہوئے اسٹاک ٹریڈنگ کر رہے ہیں, از اٹ ایتھیکل اور ان ایتھیکل؟ گڈ کوشچن. I can't say, I cannot give my opinion. If you are using ChatGPT and you are putting the documents of the organization or your emails probably, which shouldn't be on the internet, is it ethical or not ethical? It's a very good question. It's a perspective. So rule of the game has changed. آپ کو دوبارہ سے reassess کرنا ہے. Faraz talked about empathy. You talked about overall financial stability. So, environment is very volatile. So the norms have to be redefined. Norms have to be redefined. The leadership has to be redefined. So I'll question from you, and I wrote that question ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि how the HR leadership in particular, but the leadership in general, have to evolve themselves to be relevant. First thing is specifically talking about the leaders who are sitting at the top. اور اس کے بعد میں personal leadership کی بھی بات کروں گا. The fear of missing out on AI should be left behind. کیسے بھائی؟ فومو تو بہت ہوتا ہے. فومو ہوتا ہے. اب فومو میں آپ نے کہا کہ جی میں اے آئی لگا لوں اور میں اتنے لوگوں کو کی کاسٹ سیو کر لوں گا. ہاں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کمپنی نے کیا, اس کمپنی کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ تھے, اس کی ایکسیس ڈفرینٹ تھی, اس کا اسکل سیٹ ڈفرینٹ تھا. اینڈ دیر از اے ویری انٹرسٹنگ ریسرچ بائی ایسنچر. سو انہوں نے کوئی 12,000 کمپنیز کو اسٹڈی کیا, اور میں یورپ اور یو ایس کی بات کر رہا ہوں, موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز. اس میں سے صرف 12% آف دا آرگنائزیشن ور ایکچولی یوزنگ اور امپلیمنٹڈ اے آئی. ریسٹ آف دیم ور اسٹرگلنگ. سو اگر وہاں پہ اسٹرگل چل رہا ہے تو ہمارے پاس جو ابھی آپ جی پی یوز کی بات کر رہے تھے, بیکاز اے آئی رنز آن جی پی یوز, تو ہمارے پاس تو وہ ایکسیس ہے ہی نہیں, ہم تو گرے چینل سے منگواتے ہیں. ٹھیک ہے. سو واٹ از دا فومو آل اباؤٹ؟ از اٹ اباؤٹ مسنگ آؤٹ اور از اٹ اباؤٹ کریٹنگ ویلیو فار دا آرگنائزیشن اینڈ دا پیپل ورکنگ ان دا آرگنائزیشن؟ سو دا پرسپیکٹو نیڈس ٹو بی چینجڈ. پرسنل اگر میں لیڈرشپ کی بات کروں, ایمپتھی اگین, ہیومن انٹیلیجنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جب کمبائن کرتے ہیں, اف آئی ایم ناٹ بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ یور پرابلمس. اگر آپ نے کہا کہ جی میں کرپٹو ٹریڈ کر رہا ہوں یا میں اسٹاک ٹریڈنگ کر رہا ہوں یا میں کوئی اور جاب کر رہا ہوں, تو کیا پرابلم ہے, کیا چیلنج ہے میری زندگی میں, میرے فائنینشیل جو ہیں وہ میں میٹ کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا ہوں. سو آئی ہیو ٹو بی ایمپیتھیٹک. right. And Islam, I will ask you, related to this, Okay. what do you think when I am, being empathetic and organization is asking me کہ بھائی نہیں فومو تو ہو رہا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, but being in HR, being in any other processes as well, what do you think in the future organization or currently are those, even if the processes are fully automated, they will never be completely given up by having the human in it? یعنی کہ اے آئی ریپلیسمنٹ, اے آئی سمبیوسس ضرور ہو جائے گی, لیکن ہیومن ایلیمنٹ پھر بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہوگا, جس میں پھر ری اسکلنگ یہ لوگ اپنے آپ کے پلان کر سکتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک آر دوز؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ فراز صاحب نے پہلے بات بھی کی ہے, اور میں نے بھی اپنا اینڈ اسی پہ کیا تھا. اسی بات سے شروع کرتے ہیں کہ جہاں پہ ججمنٹس آئیں گی نا, وہاں پہ ہیومن ایلیمنٹس آنا ہی آنا ہے.
ठीक है. अब रेलेवेंट रहने के लिए, इवॉल्व रहने के लिए हम अपने आप को उस डाटा एनालिटिक्स और डाटा डिसीजन के लिए कितना रेडी करते हैं कि हम रेलेवेंट रहें उसके अंदर. से कि अगर CEO को अच्छा लगे कि AI ने कह दिया कि ये 5 लोग देखें रोबोटिक्स है ना कि जी ये बायसनेस नहीं है, तो ये 5 लोग जो है नॉन परफॉर्मर है. AI ने कह दिया था कि ये 5 लोग नॉन परफॉर्मर है. अब जजमेंट फिर ह्यूमन ने करनी थी कि AI बेस्ड डिसीजन करना है या जाके वहाँ देखना भी है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है. ठीक है. तो जहाँ जहाँ पे जजमेंट्स आएंगी, मेरा बिलीव ये है कि वहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन ही रहना है. सेम अब मोस्टली हम जो लोग बैठे हुए हैं ज़्यादातर HR रिलेटेड है, तो सबसे बड़ा काम जो हम करते हैं ना ऑफिस में रह के, वो होता है किसी के दुख सुनना. ठीक है. अगर आप अच्छे HR वाले हैं तो इसका मतलब है कि आपका डोर ओपन है और ग्रीवियंसेस वहीं पे आके लोग निकालते हैं. बेशक आप उसका मदावा करें ना करें, जो आप उसको पर्सनल टच देते हैं ना, वो नहीं रिप्लेस ठीक होने है, वाला. वो रिप्लेस नहीं हो सकता. सही. Can I अगर add आप something? Sorry, मुझे ना I've just thought of a story. This is actually real. So we had this employee engagement survey done, and there were 2 leaders. एक leader का profile बहुत अच्छा आया, एक का बहुत बुरा आया. When I saw the results, they didn't add up, right? Because I had worked with both these leaders, and now once you dig into that data, ठीक है, and if you were to rely solely on that data, somebody gets better career paths and better training in interventions, ठीक है. But since I knew them, we actually kind of dug deeper and we found out कि जिस team का leadership profile थोड़ा सा बुरा आया था, the team had the confidence to give feedback where they thought he needs to improve further. Right. और जो दूसरा leader था जिसका leadership profile बहुत अच्छा था, the team were scared of giving them of feedback course, because once the report would have come out, this team would have had it. ठीक है? Yes, of course. So अब वो जो है ना fine line, that you can't just rely on raw data and make decisions. I think we've not crossed that threshold where our data source is as accurate as it could be. ठीक है? There is Absolutely. biasness is there. और जिस तरह इन्होंने फैसलाबाद वाली एग्जांपल दी है, बिकॉज उसके देखें, पास अगर हमारे पास पाकिस्तान में रिसर्च हो नहीं रही है. Whenever we look at retention trends and we look at acquisitions, सब कुछ हम we are looking at Western. we don't have our own data. So बहुत unless we कम, build बहुत our कम। ground कि यार हमारे पास realistic information यहाँ की मौजूद हो, हम फैसले यहाँ के करें और डेटा किसी और का हो तो वो किसी और को कॉपी करने की कोशिश किसी और को कॉपी करने. Can we have 1 or 2 questions from here? And here, if And audience even- want even to, from here. even from here, anyone want to ask any questions from the audience? Any questions that we would like answered? Yes, please. मेरा क्वेश्चन ये कि अभी जैसे ये डिस्कस हो रहा था कि डाटा एनालाइज करके थ्रू AI हम कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते अबाउट द एम्प्लॉइज़. लेकिन एक रीसेंट वाक़या मेरी कंपनी में ऐसा हुआ जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा. वो ये था कि वी आर नॉट यूजिंग AI इस तरह के सिनेरियोज़ में, बट मैंने एक डाटा बनाया जिसके अंदर परफॉर्मेंस एनालिसिस था एम्प्लॉइज़ का. तो 2 से 3 कैंडिडेट्स थे जो कि फ्रेशर्स कैटेगरी में आते थे और उनकी जो डाटा परफॉर्मेंस थी वो हमारे पुराने एजेंट से ज़्यादा अच्छी थी. ठीक है. बट वो जब डाटा प्रेजेंट किया गया टू द लीडरशिप तो उनके रिव्यूज़ ये थे कि डाटा तो है अच्छा बट बच्चा अच्छा नहीं है. तो अगर हम ज़्यादा खूबसूरत नहीं था वो बच्चा. कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, अगर मैं 4 बंदों में बैठूँ तो किसी को नहीं पता कि मेरे टैलेंट क्या हैं, कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, या अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है या मैं थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हूँ. हाँ. तो लेकिन मेरी परफॉर्मेंस, मेरा डाटा तो अच्छा है ना. मेरा डाटा बात कर रहा है कि मुझे ऊपर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. हाँ. तो मैं उस पॉइंट से बात करना चाह रहा हूँ कि डाटा अच्छा है वो AI भी अच्छा बता देगा. जो आपने खुद एनालाइज किया डाटा वो आप जो परफॉर्मेंस बेस्ड है एनालिसिस जो हुआ है उसके अंदर उसके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं. मीन्स इफ वी टॉक अबाउट सेल्स कि उसके सेल्स के फिगर्स जो हैं वो अच्छे हैं. फॉर एग्जांपल एक एजेंट है, उसको अभी काम करते हुए, एक एम्प्लॉई है उसको काम करते हुए भी 3 मंथ्स हुए हैं. ठीक है. एंड ही इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन एन एम्प्लॉई हु इज़ लाइक उससे पुराना एम्प्लॉई है जिसको ज़्यादा टाइम हो गया. अब अगर वो उसके लेवल के ऊपर जा रहा है, अगर वो 30 सेल्स इन अ मंथ एक सीनियर एजेंट कर रहा है और अगर एक फ्रेशर आके आफ्टर 3 मंथ्स वो 30 सेल्स कर पा रहा है, तो उसका
डाटा बता रहा है कि ही इज़ कैपेबल मोर देन द एजेंट जो कि दूसरा एम्प्लॉई है उसके, मतलब ही हैज़ द लेकिन टैलेंट. उसके सीनियर्स ये कह रहे हैं कि ही इज़ नॉट गुड. सो Yes. व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग? Yes, ओके, the point is एक this. क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बैठिए प्लीज. Thank मैं you. इसको आप पहले बोलिए, आप बोलिए पहले. अच्छा देखिए, क्वेश्चन ये है कि एज ह्यूमंस आर वी, कैन वी अनबाइस्ड हो सकते हैं? Never. अच्छा, सो हु इज कंस्ट्रक्टिंग और हु इज क्राफ्टिंग द डेटा देन? So Humans? if the sales data is coming from the system, System. and the human data is saying that no, the person is not good. That's the difference. Yeah, मैं उसी पे आ रहा हूँ. हाँ. So who is constructing the data? Humans. नहीं, और sales data is interactions. system. Interactions, right? हाँ. So अगर एक बंदा सेल्स जनरेट अच्छी कर रहा है, बट हो सकता है कि जो लीडर है वो ये कह रहा है कि इसका जो हाउ पार्ट है वो वो अच्छा is not नहीं good. है, हाँ. राइट? हाँ. दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी. Yes. तो इस एज में जब हम डेटा की बात कर रहे हैं तो क्लियर कम्युनिकेशन इज द एसेंस. कि भाई क्यों, रीज़न बताओ, वाई अच्छा नहीं है, हाउ अच्छा नहीं है, अगर नहीं है तो किस तरह बेहतर हो सकता है. सो आई थिंक दैट पार्ट इज That is also. मोहसिन साहब आप क्या अच्छा, कहेंगे? इसमें मैं सिर्फ इसको, ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, एक हाउ पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. दूसरा एक चीज़ मैं इसको सिर्फ रीफ्रेस करना चाहता हूँ. आई थिंक इट्स दे नेवर मेंट कि डिसीजन, आई थिंक इट्स द कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट विच सो फार AI कैन नॉट डू. अब जिस तरह इन्होंने बात की, अब मैंने किसी को सिर्फ परफॉर्मेंस पे, इन्होंने एक डायमेंशन तो आपको बता दी है, एक हाउ है. आप मेरे साथ 6 महीने भी काम कर लें और मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, आप क्या मेरी इंटरनल इंटेग्रिटी को पहचान सकते हैं? AI नहीं बता सकता. मेरे सारे नंबर्स अच्छे होंगे, हर तरह की चीज़ मुझे, अगर मैं ही सेल्स में इन्वॉल्व हूँ, आई एम अ स्मार्ट कुकी, आई नो हाउ टू कुक डेटा. बट सम हाउ, और आपकी जो इस वक्त आपके सामने बैठी हुई है, अगेन आई वाइट हैव टू गो दैट इट्स बीन रिपीटेड न्यूमरस टाइम्स, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन इज व्हाट. तो वो क्या लर्न नहीं करता? मतलब जब मेरे 3 दफ़ा अपनी ज़िंदगी में करियर बदला है. HR इज़ माई 3rd करियर. इससे पहले मैंने 17 साल कहीं और लगाए हैं, 30 में से सिर्फ 13 साल लगाए मैं. आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं हर साल जब अपने आप को कंपेयर करूं, तो अगर मैं सिर्फ TI को देख रहा हूं, तो विद एक्सपीरियंसेस आई थिंक माई HRMS उससे ज़्यादा मुझे समझ में आती है. कुछ चीज़ अल्लाह ताला ने अंदर रखी हुई है, जिसको हम कभी गट कह देते हैं, कभी इसका और इसका कनेक्शन कहते हैं कि जी माइंड एंड हार्ट चल रहा है कि नहीं. नो, दीज आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स आइटम्स जो आम इंसान समझ नहीं सकता. There's वो also वाली चीज़ की performance एप्लीकेशन systems आपकी है. performance systems are capturing one side of the decision. ठीक है? And that is the data. ठीक है? For a person who wants to move up in the ladder in terms of career, in terms of money, in terms of coming into the eyes of the management, it's very important कि आप early in the career ये जान लें कि your movement in your career is dependent on various things. A, how you behave around receiving and moving in your targets. Number 2, how you present yourself in the organization. Number 3, how people in your network know you. Are you a performer not only in terms of your numbers, but also known by the people as a performer? जो दिखता है वो बिकता है, ये याद रखें. पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट है, तो कैपिटलिज्म इज़ द वे ऑफ वर्क. अगर आपका दुनिया में काम नज़र नहीं आ रहा ना, तो दिस इज़ एन एक्सट्रोवर्ट वर्ल्ड. तो आपको पता होना चाहिए कि आपका काम दुनिया में नज़र कैसे आए. आप काम दिखने में लग रहे हो कि यार ये तो ना पता नहीं बेकार सा बंदा लग रहा है, इसको काम नहीं आता होगा. अगर आप इंटेलिजेंट दिखने में नहीं लग रहे तो आप नज़र भी नहीं आओगे ना. और अगर आप बहुत दिखने में बहुत इंटेलिजेंट और ख़ूबसूरत और कॉन्फिडेंट लग रहे हो, ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंटली कुछ भी बेच सकते हैं. ये बात जहन में रखें. दिस इज़ हाउ वर्ल्ड वर्क्स. नंबर 4, मतलब रियलिटी ऑफ द गेम इज़ लाइक दैट बेटा. नंबर 4, अगर आपको अपवर्ड मैनेजमेंट नहीं आती तो नो मैटर हाउ गुड यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन द कॉर्पोरेट वर्क. नंबर 5, लाइज डोंट वर्क. इट विल वर्क नाउ बट इट विल नॉट वर्क मोर. तो ये नहीं हो सकता कि आप कर ना रहे हो
اور دنیا آپ کو کہتی رہے اچھا ہے. سو نمبر 3 جو میں نے کہا تھا نا کہ آپ دکھنے میں نہیں نظر آ رہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دکھنے میں بہت انٹیلیجنٹ نظر آ رہے ہو لیکن نہ ہو تو آپ اوپر چڑھتے جاؤ. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ صرف اوپر جا کے کہانیاں بیچ دیتا ہے, نہیں آتا, اوپر والے بھی بے وقوف نہیں ہیں. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو آتا نہ ہو اور آپ چلتے جاؤ. دیر ول بی اے سیلنگ اینڈ یو ول ہٹ اٹ فاسٹ اف یو لائی. سو اٹ ہیز ٹو بی سبسٹنس ٹو گو اپ ایز ویل. ادھر سے کسی نے کہا تھا ایک چیز اور ایڈ کر دیں اس میں جو آپ کہہ رہی ہیں, ایک اینڈ مے بی آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ اس سے اگری کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی شاپ پہ جاتی ہیں, آئی ایم اے سیلز مین, کین آئی پش یو دیٹ نہیں آپ نے یہی لینا ہے. Why do we, ہم یہ جب سیٹ کی بات آتی ہے یا جب اس کی آتی ہے, how can we remove that? He pays No, there money has to to you. be a need for it, of course. He pays money to you. He has all the demand to ask or demand کہ جی میری جو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اس کا ROI کیا ہے. ہاں, very important. وہ اور وہ کوئی بری بات نہیں ہے. جنرلی ہم ان کو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ سوال زیادہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں ہے کیسا ہاں, کلچر ہے. لیکن ایک بات اور ہے, انٹیلیجنٹ پرسن کریٹس دا نیڈ فار دیم. یہ بات ذہن میں رکھیں, چاہے وہ پاکستانی سیٹ ہو, انگلش سیٹ ہو, جرمن سیٹ ہو, دنیا میں ہر جگہ سیٹ پائے جاتے ہیں. سیٹ از سم ون ہو ہیز دا منی اینڈ کریٹ دا جابس. ایوری دیٹ پرسن. ہم یہ کہتے ہیں پاکستان میں سیٹ ہے, پوری دنیا میں سیٹ ہے. سیٹوں کے بغیر تو جابس ہی کریٹ نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیں کہ این انٹیلیجنٹ پرسن کریٹس دا نیڈ فار دیم سیلوز. اے گڈ پرسن ول ناٹ لیٹ دا ٹیلنٹ گو. دے ول آلویز وانٹ کہ ہمارے پاس ٹیلنٹڈ بندہ ہمارے پاس ہی آ کے رک جائے, وہ کسی اور آرگنائزیشن میں نہ جانے پائے. تو آر یو دیٹ گڈ پرسن, سب سے امپورٹنٹ چیز. جی آپ کچھ پوچھنا Can I چاہیں just گے؟ add one thing here? Please do. So there was this recent 100-meter race. The person who came first and the person who came 8th, the difference between those people was 0.12 seconds. Right? So it's become a very competitive world. ٹھیک ہے, we are rapidly evolving. People who've gone to senior roles they may look dumb, but they're not. ٹھیک ہے, because ان کا ایک ایکسپیرینس ہے, they've dealt with people multiple times. I interview maybe 1,000 people a year. ٹھیک ہے, so ہم لوگوں کی اپنی اسکل تھوڑی سی انہانس ہوئی ہوتی ہے. We would never want to undervalue a person who creates value for the company. It makes no business sense. Yeah. It would be dumb of us. ٹھیک ہے. You have to be a good product to be considered a good product. Same works for our organizations. We can brand ourselves to be the greatest organization, but if that employee experience and even the candidate experience is otherwise, ٹھیک ہے, the company cannot sustain that repute. آپ کے پاس 9 بچے آتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے, آپ ایک کو ہائر کرتے ہیں. These 9 kids have a reason not to like you. They can hate you. سفارشی آگے ہوگا. If we create good experiences for these 9 people who have been rejected and say, "Hey, yaar, I was heard, I was treated with respect, my time was not wasted, I had a good interview." ٹھیک ہے, he would want to come back to you again. It all comes down to creating those experiences as a leader and as an organization. You do that, yeah. Where you do that. تو وہ ضروری ہے. You have to have some patience in the system. If it's not there, those organizations will collapse eventually. Yes, please. Assalamu alaikum everyone. My name is Maryam Saeed. So apologies in advance. I have a little bit of lengthy question. Question ke 2 parts hain. First of all, Sabahat, thank you so much for emphasizing on the human element or human touch required much more now in the organizations than before. So first part ye hai, I can say I am the HR, اور سب یہاں پہ کریئر سوئچ کرنے کی بات کر رہے ہیں. being an HR is my second career. So it was a hassle for me obviously convince کرنا recruiters کو career کیوں switch کرنا ہے. So I can say being an HR, I am the person benefited with the advancement of AI. I am not feared of losing my job. You can say it can be my luck, میں نے plan نہیں کیا تھا اس طرح سے. In terms of education, I come from economics and psychology background. Opting HR with major economics, it helped me understand the language of business much more early than the other HRs I was working with. It benefited me. Advancement of AI let my psychological knowledge and experience advanced in my career.
سو میرا فوکس ڈیلی ٹاسک سے, ڈیلی روٹین سے, جو میٹر آپریشنل تھے, جو اے آئی نے ریپلیس کر دیے تھے, ان سے ہٹ کے سائیکولوجیکل امپیکٹ اور سائڈ پہ شفٹ ہو گیا, وچ آئی انجوائے مچ مور. ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ آئیدر ریپلیس کرے گی, نہیں کرے گی, ہم ایڈوانس ہوں گے, نہیں ہوں گے. بینگ این ایچ آر وی آر ڈسکسنگ اسپیسیفکلی اوور ہیئر. ہم سب اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ فیوچر آف ایچ آر از اے آئی پاورڈ ایچ آر. Only those HR who adapt and use AI will survive in the future. So I believe this is the one phase. ہم نے AI adopt کر لیا, ہم اس کو یوز کر رہے ہیں, but with that we have ample time left. ہمارے رولس جو ہیں وہ کس طرح سے ماڈیفائی ہوں گے ان فیوچر. ایک اور ڈبیٹ یا ڈسکشن یا وچ وی کین آل ایگری از دا اسٹریٹجک رولس. ہمارے ڈیلی جو آپریشنل رولز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ایلیمنیٹ ہوں گے مارکیٹ کے بیچ میں سے, اور اسٹریٹجک رولز جو ہیں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہمارے سیزن پروفیشنل جو ہیں وہ اس اسٹریٹجک رول تک پہنچنے کے لیے ہیو کوائٹ نمبر آف ایکسپیرینس, لیٹ سے 10, 12, 15 years of experience, اور you can say who actually understand the overall organization, جنہوں نے ایک ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کیا ہے in the main decision making, policy making, building and major stakeholder discussion. وہ لوگ ہوتے ہیں. آپ کا کوشچن کیا ہے؟ اوور ہیئر میرا یہ کوشچن ہے کہ ہم نے یہ گیپ جو ہے وہ کس طرح سے منیمائز کرنا ہے کہ ود دا ایڈوانسمنٹ آف اے آئی ہم اپنے ایچ آر کو اسٹریٹجک رولس کے لیے کس طرح سے ریڈی کر سکتے ہیں, اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار آر ایچ آرس ٹو بی ایموشنلی انٹیلیجنٹ. Right. So how HR can be developed into the strategic HR, and how important it is for HR to be emotionally intelligent. So جو آپ کے کویسچن بیسکلی آپ نے نا اپنے کویسچن کے کافی آنسر خود ہی دے دیے ہوئے ہیں آلریڈی, تو جو پارٹ بچ گیا ہے وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں ہاں اوکے اوکے نو پرابلم. اچھا اسٹریٹجک ایچ آر اگر آپ دیکھو تو میرا بلیو یہ ہے کہ لاسٹ 5 ایئر سے آلریڈی وہ موو ہو چکا ہے. اگر آپ 5 سال پہلے والا ایچ آر دیکھ رہی ہوتی یا کسی سے آپ پوچھیں, ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کیا ہوا ہے, اس سے یہ والا ایچ آر انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, جب سے بزنس پارٹنرنگ کا رول جو ہے ایوالو ہوا ہے, اور بزنس پارٹنرنگ کے رول میں مسٹ نہیں ہے کہ آپ کی ایچ آر کی ڈگری ہو. جیسے آپ کی اکنامکس کی ڈگری زیادہ سپورٹ کر سکتی ہے اگر آپ فائنینشیل بی پی والی سائڈ پہ ہوں, اسٹیٹکس والی سائڈ پہ ہوں, اور اسی طرح سے آرگنائزیشن جو ہے انجینئرز ہائر کر رہی ہیں جو کہ پلانٹ کے بی پی والی سائڈ پہ ہیں. تو ایچ آر آلریڈی اسٹریٹجک اسٹائل پہ یا اسٹریٹجک پہ موو ہو چکا ہے, بہت کم کنونشنل ایچ آر رہ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب جو اسٹریٹجک سائڈ ہے اس کی وہ بزنس پارٹنرنگ والی سائڈ ہے. بزنس پارٹنرنگ کا ماڈل کس طرح سے ایوالو ہوتا ہے کہ جب آپ بزنس کی لرننگ لیتے ہیں, اگر آپ کو بزنس کا آئیڈیا نہیں ہے جس کی آپ پارٹنرنگ کر رہے ہیں, اگر آپ کو اس کا اس طرح سے آپ نے اس کی ایجلٹی کے ساتھ لرننگ نہیں کی ہوئی, تو آپ ایک اچھے بزنس پارٹنر نہیں ہو سکتے. آپ اس کو اس طرح سے ڈیفائن نہیں کر سکتے اس چیز کو. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ جو پارٹ ہے کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ, میرا خیال ہے کہ ایچ آر میں اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو بہت بڑا فیلئر ہے یہ. کچھ اور کر لیں. کسی بھی دور کا ایچ آر ہو, وہ اگر ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو وہ ایچ آر نہیں. پھر ایک اور کریئر سوئچ سوچ لینا چاہیے. ہوتے ہیں کچھ لوگ جو وہ نہیں کر سکتے. میں ایک میری پاس آرگنائزیشن میں میری ہی ٹیم میں بچے تھے, تو ہمارا ایک بلنڈر ہوا ہم سے. ہر آرگنائزیشن میں ہوتا ہوگا, اس طرح سے کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا ہوگا. بلنڈر یہ ہوا کہ ہم نے سی او ہائر کیا, اور سی او کی سیلری صرف 3 بندوں کو پتہ تھی ہائر ہونے سے پہلے, اور دا ڈے 1 سی او جا کے سی او کو یہ شکایت کرتے ہیں آن دا ڈے 1, ابھی وہ لینڈ کیے ہیں, کہ یہ کس طرح کا کلچر ہے آپ کی آرگنائزیشن کا. ہر کوئی کہہ رہا ہے اتنے پہ آ گئے ہیں, اتنے پہ رکھ لیا, بڑا مہنگا ریسورس رکھ دیا. تو میرے جو باس تھے اس وقت جو ہیڈ کر رہے تھے ایچ آر کو, تو انہوں نے مجھے کال کیا, انہوں نے کہا اسلام یا تمہیں پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے یا وہ جو صاحب جو ہم نے ہائر کیے ہیں ان کو پتہ ہے یا سی ای او کو پتہ ہے, تو گیم تو ہم 4 میں ہیں, تو یہ کیسے باہر نکلی. میں تو اپنی قسم دے سکتا ہوں. کہتے ہیں تو آپ کا کیا مطلب کہ میں نے کیا ہے. اب وہ سی او بھی نہیں کر سکتا, سی او کیوں بتائے گا کہ میں نے ایک سی او ہائر کر لیا اتنے پہ. تو میں نے کہا سر لیٹ می ڈگ اٹ آؤٹ.
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. अब मुझे परेशानी सबसे जूनियर मैथ, अब मैंने कहा भाई फंस गया. अब मैंने बात करनी शुरू की, कहाँ से बात किसने सुनी, कहाँ से सुनी, चलते चलते मैं पहुँच गया डाइनिंग टेबल पे, ठीक है, जहाँ पे लंच करते हुए ये बात वहाँ से स्टार्ट हुई. और वन ऑफ माय टीममेट जो कि उस वक्त रिवार्ड वाली साइड देख रहा था, क्योंकि मैं उस वक्त रिवार्ड को लुक आफ्टर कर रहा था, तो मेरा जूनियर था, तो उससे ये बात चल पड़ी, क्योंकि वो जब मैंने डॉक्यूमेंट उसके हैंड ओवर किए ऑन बोर्डिंग के, तो वहाँ से बात चल पड़ी, वहाँ से निकली. लड़का बड़ा अच्छा था, काम में टू गुड था. मैंने आज तक जितने रिवार्ड्स के प्रोफेशनल के साथ काम किया, बहुत कम लोग होंगे वैसे. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार हुआ क्या, वो बात इमोशनल इंटेलिजेंस. तो कहता है सर जब भी मैं देखता हूँ ना कि यार एवं बंदे का इतना कोई प्रोफाइल है नहीं, इतनी ज़्यादा सैलरी, और हम जैसों को देखे कितनी सैलरी पे रखा हुआ, तो वो अंदर से वो जो है ना एकदम से इमोशंस जागते हैं. तो मैं एक्सप्रेस कर बैठा ऐसे ही करते कि देखें इस दफ़ा सैलरी बढ़ाइए 10% और इतना महंगा बंदा ले आए साथ. देखें ना, ठीक सही है. बात है. तो मैंने उसके बाद ना, खैर वो तो कोड ऑफ कंडक्ट का मामला था, टर्मिनेशन हुई. उसके बाद मैंने ना अपनी टीम को इकट्ठे किया, और मैं अब जब भी नई टीम ज्वाइन करता हूँ पहले दिन कहता हूँ कि अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है ना किसी और की सैलरी देख के, तो ये जॉब तो आपके लिए नहीं है. हमने हायर करने हैं लोग, हमने ऑन बोर्ड करने हैं. आपको लगेगा आपके लेवल के नहीं है, लेकिन लेके आना है. तो बेहतर है शुगर बढ़ाएं अपनी. सो इमोशनल और इमोशनल इंटेलिजेंस होने में बहुत फ़र्क है. इसके लिए एक पूरा सेशन चाहिए मेरी जान. देयर इज वन थिंग आई एम मिसिंग अ लॉट इन दिस डिस्कशन. मोहसिन आप कुछ जी, मैं एक पॉइंट उन्हीं के आंसर का देना चाह रहा था कि एक और चीज़ जो मैंने रिसेंटली ट्राई की है कुछ अर्सा पहले, जो आप कह रहे हैं ना मैम आपका टाइम बच जाता है. आई थिंक कि आप जिस तरह को विजुलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, दैट इज़ ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेड एरा, जहाँ पे इंसान हैं थोड़े बहुत और शायद इक्वल रेशो में, मुझे नहीं पता है, डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल किस लाइफ साइकिल स्टेज पे है टेक्नोलॉजी के. लेकिन वहाँ पे नाउ, एंड दैट्स अ फैक्ट बेस्ड इंटरेस्टिंग. आई थिंक आई इंटरव्यूड 90 पीपल from HR fraternity, 3 to 8 years of experience, and I wanted to ask, आप बताते हैं OD में काम किया हुआ, what is OD? अब मुझे उन 90 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने आज तक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अलावा ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की भी बात की है. दिस इज़ 2 out of 90 people, by the way, because none of them actually know that what is organization design, and that's what your free time is actually required. The whole world is moving towards how this augmented era, उसमें जैसे सबात ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, जो वर्क को रीडिज़ाइन करने का पूरा क्वांटम है ना, ओल्ड रूल्स को, ओल्ड वेज को बदलने का, वो जॉब आती ही उसकी है जो बंदे को सही तरह समझता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन में HR के लोग होते हैं. तो वो बजाय इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, बजाय आपके TQM या TPM के कंसल्टेंट से निकल के फ्यूचर के अंदर आपका काम बनता है कि आप वर्क को रीडिज़ाइन किस तरह करते हैं. और उसके एम्स बहुत सारे हो सकते हैं. किसी जगह पे वो बर्नआउट को रिड्यूस करने के लिए आप कर रहे होंगे, किसी जगह पे प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए कर रहे होंगे, किसी जगह पे एक्यूरेसी और टाइमलीनेस को बेहतर करने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन वो जॉब फ्यूचर में आपकी होगी. एक टॉपिक जो हम लोग मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो ये है कि हाउ द इंक्लूसिवनेस लुक लाइक. ऑल्दो हम बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव पैनल इस वक्त नहीं लग रहे हैं, और जब भी हम डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बात करते हैं सबसे पहले सब ये कहते हैं जेंडर की बात हो रही है. बट इन मैनी वेज दिस इज़ अ वेरी डाइवर्स पैनल एज वेल, because all of us belong to different types of industries, different age group. Gender तो हमारा मेरे अलावा सबका है एक ही, लेकिन ओरिजिनल इनवाइट्स में हमारे थोड़े से ज़्यादा पैनल जेंडर डाइवर्स था. लेकिन inclusivity in future will actually be dependent on lot many more areas. For example, ability of performing jobs, ability, the physical abilities, the mental health, neurodiverse. इसके ऊपर मैं चाहूँगी कि हम थोड़ी बात कर लें, फिर then we will be concluding the panel. हम अभी के दौर में देख रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंक्लूसिविटी के ऊपर बात नहीं करते. हम कहते हैं कि एक ही तरह के लोगों कुकी कटर में कटे हुए हों. हमारा कल्चर भी जो ना कुकी कटर्स पैदा करता है कि एक ही तरह के सारी मखलूक हो, हमारी वैल्यूज़ को फॉलो करता हो. हमने कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं, सभी उसी मशीन में से गुजरते जाते हैं. जेन ज़ी हाउएवर ये कहती है कि जी हम अपने जैसे हैं, हम अपने जैसे रहना चाहते हैं, काम कराना है तो ऐसे करा लो.
اینڈ دس از ہاؤ دا فیوچر موسٹلی لک لائک ایز ویل. جس میں نیورو ڈائیورس بھی ہیں, جس میں ڈاؤن سنڈروم بچے بھی ہیں, جس میں ہمارے وہ لوگ بھی ہیں جو کہ فزیکلی ایبل نہیں ہوں گے تو وہ ریموٹلی کام کر لیں گے, پاکستان کے کسی بھی شہر سے کسی بھی گاؤں سے کام کر لیں گے, بہت ہی ریموٹ کہیں بیٹھے ہوں گے تو پوری دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھ کر کے اپنا کام دے دیں گے. سو انکلوژن از مچ مور دین جسٹ جینڈر, جسٹ ایج, just generation. It is, and then intersectionalities as well. I can have any orientation, any gender, any ability, any physical, mental state at any point in time, any degree or non-degree or whatever. I can be HR and doing AI job, which I'm doing currently as well, AI governance, being an HR person. What one area do you think that organization need to develop as a resilience in them to have this kind of talent absorbed in it in future? Okay, so I think the first thing is the mindset. We were just having this conversation, I think, with earlier, where I said that the problem with my generation is that we're trying to find our stories in Gen Z. Yeah. Yes. That's not going to happen. Yes. Okay? They will write their own stories, they will evolve, they will have different career paths, they have different aspirations. ہم کہتے ہیں یار ہم نے تو بڑا رگڑا کھایا تھا تو مجھے کہتے ہو. ہاں, اینڈ سو ٹھیک ہے, آپ کے آفس سے جو ہے تو ٹم ہارٹنز از لائک 22 kilometers away, I can't even walk over there. ٹھیک ہے, so that's a real problem. We need to solve that problem. We need to have Tim Hortons around our offices. But preferably inside, serving matcha. ہاں جی, but یہ کہ تھوڑا سا we have to let go. Yeah. Right? We have to let go. Stop looking for our stories in their lives. It's not going to happen. So 4 سال میں promotion کے بجائے 1 سال میں ہو سکتی ہے. دیکھیں, okay, so promotion is what? Right. We have to define, everybody says, I'm finding purpose, I'm finding growth. ٹھیک ہے, you will not get it in 3.5 months. Right. ٹھیک ہے, تھوڑا سا وہ ریالٹی چیک ہمیں دینے کا ہے. The problem with us is that we send 19-year-olds to universities where they are raised by other 19-year-olds and by a faculty who has no connection with our business. Yes. ٹھیک ہے, and then we hold these Gen Zs accountable کہ یار تم لوگ کیسی عجیب سی باتیں کر رہے ہو. We're at fault. I mean, I know Mohsin and I know you and I know myself. آپ سے میری بہت زیادہ ملاقات نہیں ہوئی ہوئی. We've made an effort to go to the faculty. ٹھیک ہے, we consistently go there, we're trying to bridge that gap. ٹھیک ہے, my last 2 experiences have been horrible. I told these universities, and I will not name them, I said I want to talk to HR people, I want to guide them about their careers. I went and ایک ٹائم پہ there were IT people and there was one time there were marketing people and there was like HR سے 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, so I made this and I'm taking my time out to spend at that university trying to bridge that gap. You've done it. Mohsin has been part of faculty. آپ نے بھی کیا ہوا ہے. That is what is missing. That connect is missing. کہ جو ان بچوں کے اوپر influences ہیں, ٹھیک ہے, وہ influences شاید relevant نہیں ہے current business world کے ساتھ. So we will make effort to, and the third time this happens, I go to university and they put me, they don't let me meet the HR people, I will stop making that effort. ٹھیک ہے, I don't want them to meet me halfway. I'm willing to go 90% of the way, but at some point of time that 10% has to come through. The same thing is with Gen Z. They also have to make that effort. ٹھیک ہے, they're not going to find purpose, job satisfaction in 3 months. تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے. Relationship always reciprocal ہوتا ہے. Yeah. جنید, یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے. جین زی کے بعد الفا بھی ہے, ظاہر ہے, اور ہم لوگ بھی ہیں کہیں پہ بیچ میں پھنسے ہوئے. ہم نہیں ہیں کہیں, میں we already are. We are transitioning. انہوں نے پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. میں نے کہا جائیں آپ. So transition میں we need to understand کہ ہمیں کتنا اوپن ہونا ہے. آئی ایگری کہ بیلنس کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے, کہ جین زی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, بٹ یہ ٹرانزیشن بڑا تیزی سے ہو رہا ہے. اب میں الفا کی اگر بات آؤں تو اس کی ورک پریفرنسز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوں گی. جی جی, ٹھیک ہے, تو جین زی اس ٹائم پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہوگی کہ یار ان کو کیسے انکلوڈ کرنا ہے. کلوتھنگ چاہیے جی. ہاں بالکل. اچھا, سو You don't know Pooji Clothing and 6-7, right? You need to know them. So we're cancelling dinner? Cancel dinner. So being more open and specifically, اب میں تھوڑا سا شفٹ کروں گا ٹیکنالوجی اور انکلوژن کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک ہائرنگ سافٹ ویئر ہائر ویو کے نام سے, یوزلی یونیلیور اس پہ اسیسمنٹس وغیرہ کرتا ہے, اور
बड़ी 500 फॉर्चून कंपनीज में से बहुत ज़्यादा कंपनी उस पर असेसमेंट करती हैं. सो इंटरव्यू असेसमेंट है, AI करता है. इनिशियली व्हेन दे बिल्ड देयर मॉडल, सो वो यूरोपियन और US पे बेस हुआ था. उसमें जो अफ्रीकन एथनिसिटी थी उसका सैम्पल था ही नहीं. And they don't do ADHD as well, so I particularly reject that. हाँ, सो अब क्या हुआ कि इनिशियली जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो एक साइड पे बहुत रिजेक्शन हो गई, तो उन्होंने Yes. अपने मॉडल को अपडेट किया. Yeah. The best thing is, whether it's technology, whether it's growth of the organization, it's being more open, listen to different ideas and value them. Yeah. हो सकता है कि एक वो जो जेन अल्फा का है ना, और ये होता भी है. आई इंटरेक्ट विथ माई किड्स, सो वो जो मेरा छोटे वाला है वो बाज़ दफ़ा ऐसी बातें करता है तो मैं सोचता हूँ हाँ यार ये हो सकता है, वाई नॉट. Yes. सो They have वी better ऑल्सो ideas, नीड टू yes. चेंज द परस्पेक्टिव. Absolutely. अच्छा, So इसमें quick एक- answer, we are जी, now concluding. जी, जी, Yes. इसमें इसके साथ एक चीज़ जो हम लोग अक्सर मिस करते हैं, इंक्लूजन को जब हम एक्सक्लूड कर देते हैं, आई थिंक द होल गेम फॉर फ्यूचर विल बी अबाउट स्किल्स एंड एडजेसेंट स्किल्स बोथ. Yes. आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपने HR से आप HR का एक पर्टिकुलर एरिया एम्प्लॉय रिलेशंस देख रहे हैं, no wonder you can definitely handle compliance, you can handle legal areas other than कि आपने जहाँ पे sign off करना हो लॉ को, क्योंकि ये दोनों को systems thinking और process thinking चाहिए होती है. हमारे बच्चों में वो नहीं होती. वो अक्सर आके आप जो बात फराज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में 6 किस्म की इंटर्नशिप की होंगी. अगर मेरे जैसा बेचारा बुजुर्ग उनसे पूछ ले कि यार आपका कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं जी मैं तो अभी पास होके आया हूँ, मैं कहता हूँ कि इंटर्नशिप पे कुछ नहीं किया आप बता तो पाओ कि जी इस इंटर्नशिप में अगर मैंने लेट्स से सिर्फ ड्रामा ही ऑर्गेनाइज किया है, मुझसे किसी ने 30 साल पहले भी पूछा होता ना तो मैं कहता कि जी आई न्यू हाउ टू हैंडल डाइवर्स टाइप ऑफ पीपल. वो सीखा है मैंने वहाँ से. हाउ टू हैंडल इवेंट्स इन या मैनेज इन स्मॉल बजट्स, वो सीख के आया हूँ मैं वहाँ से. माइंडसेट अगर हम इसको कैप करें तो एक्चुअली व्हाट वी नीड टू बी वेरी इंक्लूसिव इज ग्रोथ माइंडसेट. उसको सही तरह से प्रचार करने की बहुत ज़रूरत है. वो मिसिंग है. हम खुद ही साइलोज बनाते हैं. ऑब्वियसली माइंडसेट फर्स्ट, लेकिन इस सारी स्टोरी में जो मेन थीम है वो है कि ऑर्गेनाइजेशन जब इसको डिज़ाइन करने बैठती है तो फिर हम एक ही कमरे में बैठ के उसको डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, अब जब एक रूम में डिज़ाइन करते हैं तो उस रूम में जितनी पार्टिसिपेशन होगी उसी तरह की पॉलिसी आ जाएगी. उसी तरह से हमने लास्ट ईयर एक छोटी सी एक्टिविटी की. हमने कहा ओके एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे हुआ, उससे कुछ निकाला तो कुछ बेनिफिट पॉलिसीज़ बनानी थी. तो हमने कहा हम ना एक सर्वे रन कराते हैं. तो हमने ना सर्वे में सिर्फ एज ग्रुप रखा और उसका एरिया रखा कि उसका बिलोंग किस एरिया से है. Right. बैठा ज़रूर लाहौर में है, पीछे बहावलपुर का है, पिंडी वाली साइड से है, तो कहाँ से. तो उसके जो रिजल्ट आए ना वो बड़े अमेजिंग आए. जनरेशन की नीड अपनी जगह पे, वजन जेनजी को हेल्थ कार्ड नहीं चाहिए ना, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी. ठीक है, कुछ को चाहिए, कुछ को एजुकेशन स्कॉलरशिप्स चाहिए, कुछ को अपने बच्चों के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें. लेकिन सबसे ज़्यादा अमेजिंग क्या था कि जो गुजरांवाला का रिसोर्स है उसकी नीड और लाहौर के रिसोर्स की नीड डिफरेंट थी. So you have to be very, very cognizant of everyone's यस need. तो हमने किया ये कोशिश ये की कि हमने जो उसमें पार्टिसिपेशन है ना वो इस तरह की बनाई कि जिसमें ग्रेडिंग के सारे लोग लिए Yeah. कि न्यू कमर है उसको भी डाल दिया और पेपर पकड़ा दिया कि ये बजट है, राइट अप करो किस तरह से आप लोग करेंगे. ठीक है, तो वो भी बड़ा अमेजिंग आया क्योंकि उसको भी नहीं कर सकते थे सारी चीज़ें. तो फिर अब हम फ्लेक्सिबल बास्केट और इस तरह से लोगों को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग. Trying and trying hard is Trying it. hard. So, very interesting conversation. We can have the whole day here. We can go up to Faraz ने जैसे हमें कहा था कि let's till- have the till dinner dinner, here. We can continue, but time is short and we have to now conclude. Big thank you to all of you. Thank you so very much for being a good audience. Thank you, Zubaan. Thank you so very much, all of you.